Good morning, students. Today I am here with chapter 7, Adjectives, Degree of Comparison from your English Grammar book, Innovative Basic English Grammar. Students, I had explained the term adjectives in my previous video. Today we will discuss about the degree of comparison. So let me start here. Adjectives are the words which describe the noun or pronoun. So there are 3 degrees of comparison in English: positive degree, comparative degree and superlative degree. संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स होते हैं. इनकी कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव, नेक्स्ट इज सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री, वी यूज द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग. पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ कब करते हैं बेटा? जब हम एक चीज़ के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं कुछ. हियर आर एग्जांपल्स: सैम इज टॉल, the house is big, this flower is beautiful. In these 3 sentences, Sam, house and flower are singular, and that's why we have used here positive degree: tall, big and beautiful. Next is comparative degree. We use the comparative degree when we compare 2 persons, 2 things with each other. दो चीज़ों को एक दूसरे से तुलना करते हैं. Here are examples: Sam is taller than John. This house is bigger than that one. She is richer than him. Here, Sam, house and she. These are compared with John, another house and a boy. So we have used comparative degree: taller, bigger and nicer. First sentence means Sam John से लंबा है. सेकंड, यह घर दूसरे घर से बड़ा है. थर्ड, वह लड़की उससे ज़्यादा अच्छी है. बेटा जहाँ भी आप देन वर्ड देखेंगे जिस सेंटेंस में, वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है, THAN. इस देन का मतलब क्या होता है? जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. एक और वर्ड होता है देन, THEN. उसका मतलब होता है तब. सो यू आर टू कीप इन माइंड, wherever you see the word THAN, you are to put their comparative degree of the adjective. Next is superlative degree. We use the superlative degree when we compare more than 2 persons or things with one another. It is the highest degree of quality. Superlative degree का हम किसी का गुण बताते हैं तो हम इसको एक्सैगरेट करके यानी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. एग्जाम्पल्स आर हियर: पीटर इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन क्लास. एलिस इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द नेबरहुड. नेक्स्ट, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. हियर Peter is the smartest. Whenever you see the word the before the superlative degree, you are to tell that here is superlative degree used for the boy or any noun, etc. Peter, Alice and blue whale. These are nouns. Class, neighborhood and animals. These are defining collective nouns. Okay beta, but we have used here
superlative degree, smartest, sweetest and largest. फर्स्ट सेंटेंस मीन्स पीटर क्लास में सबसे स्मार्ट है. सेकेंड सेंटेंस मीन्स एलिस अपने पड़ोस में सबसे स्वीटेस्ट यानी सबसे अच्छी सबसे प्यारी लड़की है. ब्लू व्हेल सब जानवरों में सबसे ज़्यादा बड़ी है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल. जहाँ एक शब्दांश होता है किसी विशेषण में तो उनका हम कैसे यूज़ करेंगे. एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एड ER एंड EST. अगर एक शब्दांश है तो हम क्या लगाएंगे ER और EST. ई लेटर से एंड होते हैं यानी खत्म होते हैं तो वहाँ हम केवल R और ST को ऐड कर देंगे. सम एडजेक्टिव्स डबल द लास्ट कंसोनेंट. कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट व्यंजन, कंसोनेंट्स का मतलब आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी व्यंजन, यानी लास्ट लेटर जो है वो डबल हो जाता है. Here I am reading these adjectives and their comparative and superlative degree for you. You are to learn them wholeheartedly. First one is small, that will be smaller and smallest. Warm, that will be warmer and warmest. Old, older, oldest. Nice, here you can see E letter is at the end of this word, so we will say nicer, nicest. Next, big. Here you will double the letter Z. You have to do BIGGER, BIGGEST. That will be spoken as big, bigger, biggest. Next, adjective of two syllables. कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें दो शब्दांश होते हैं. Some adjectives of two syllables add ER and EST. कुछ विशेषण शब्दों में तो ER और EST लगा देते हैं. For adjectives ending in Y. अगर कोई Y से खत्म होता है कोई शब्द, कोई आपका विशेषण, तो हम क्या लगा देंगे कट Y एंड देन एड IER एंड IEST. हम वहाँ पर Y को कट करके IER और IEST लगा देंगे. यूज मोर एंड मोस्ट. कुछ विशेषण शब्द जो फुल, लेस, इन और एड से खत्म होते हैं तो हम उनके साथ में मोर और मोस्ट लगा देंगे. मोर का मतलब होता है इन कंपैरेटिव डिग्री ज़्यादा और मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा. नेक्स्ट, सम अदर एडजेक्टिव्स ऑफ टू सिलेबल्स यूज मोर एंड मोस्ट. For example, modern, famous, normal, correct, etc. Here I am reading this table for you and you are to learn them. Narrow, narrower, narrowest. What will you say? Narrow, narrower, narrowest. Next, happy. As you are looking here, Y is at the end of this word, so you will do it happier, happiest. IER, HAPPIER, HAPPIEST. Next, useful, that will be more useful, most useful. Next, boring, more boring, most boring. Next, modern, more modern, most modern. Next, adjectives of three or more syllables. In above table, we read the words which end with one syllable and two syllable. In this table, we will read about the adjectives having three or more syllables. Adjectives of three or more syllables use more and most. इनके साथ में more और most लगाते हैं. First one is here, beautiful. It will be changed into more beautiful, most beautiful. Next, dangerous. You will be used more dangerous and most dangerous. Next, exciting. It will be more exciting and most exciting. Okay, beta. Next,
irregular adjectives. जैसे irregular verbs होती हैं वैसे ही कुछ irregular adjectives भी होते हैं. You will have to memorize this. आपको ये याद करने हैं. I am reading for you. First one is good. In comparative degree, it will be better instead of gooder. You are never to write gooder, but will be here better, and in superlative degree, it will be best. यानी अच्छा, उससे अच्छा और बहुत अच्छा. Next, bad. Bad means क्या होता है? बुरा. It will be changed into worse and worst. यानी उससे बुरा और सबसे बुरा. Next, little. Little means क्या होता है बेटा? थोड़ा. Less. Less means उससे थोड़ा, and least means सबसे थोड़ा. So you will speak like this: little, less, least. Next, much or many. That means कुछ या ज़्यादा. It will be changed into more and most. Next, far. Far means दूर, and it will be changed into farther or further. And in superlative degree, it will be farthest or furthest. Next, late. It will be changed into later or latest. Next, old. It will be converted into older or elder in comparative degree, and superlative oldest and eldest. Now, I think you had tried at your homes to solve the exercises. I am giving you solutions. So, you are to fill all the blanks neatly. First one is complete the table. Here are 3 columns: positive degree, comparative degree, and superlative degree. In first one, here is word given in positive degree, that is heavy. We will cut Y and change into comparative like heavier and heaviest. Okay. Next, comparative degree, I have a word for you: hotter, and convert into positive degree, it will be hot. Hot means क्या होता है? गर्म. As you can see here, T letter has been doubled, so you are to do the same in superlative degree also, that will be hottest. Next, sad. You are to do last letter double, so it will be sad, sadder, saddest. SADDER, SADDEST. Next, bad. Word in comparative degree, that is easier. That means here should be Y, so we will make it in positive degree easy, and in superlative degree we will cut Y and put IEST. Then it will be called easy, easier, easiest. In same way, here is a word in superlative degree, that is laziest, and in positive degree it will be lazy, and in comparative it will be lazier. So we will speak like this: lazy, lazier, laziest. Next, large. It is in positive degree. Change into comparative and superlative, that is larger, largest. Next, weaker, that is comparative degree. Change into positive, it will be weak, and in superlative it will be weakest. So we will speak like this: weak, weaker, weakest. Next, brightest word is given in superlative degree, so it will be bright in positive and brighter in comparative degree. So we will speak like this: bright, brighter, brightest. Next, here is the word fastest, that is in superlative degree, and in positive it will become fast, and comparative it will become faster. So speak like this: fast, faster, fastest. Next word is here gay, G-A-Y, gay. Here you are not to cut Y, and it will become gayer
and gayest. Gay, gayer, gayest. Next, kinder word is given in comparative degree. So in positive degree it will become kind, and in superlative it will become kindest. Kind, kinder, kindest. Next is younger. In positive degree it will become young, and superlative youngest. So you will speak like this: young, younger, youngest. Next, tallest word is given in superlative degree. So change it into positive. Next, noble word is given in positive degree. When we will change it comparative and superlative, it will be noble, nobler, noblest. Next, richer. That is in comparative degree. It will become rich in positive and richest in superlative degree. So you have to speak like this: rich, richer, richest. Next, B exercise. Fill in the correct form of the words in brackets, comparative or superlative. The first one has been done for you. इन सेंटेंसेस में आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को फिल करना है. पहला आपके लिए किया गया है. वॉच केयरफुली. माई हाउस इज डैश देन योर्स. हियर इज वर्ड इन ब्रैकेट बिग. So as you can see here word THAN, then that means compare कर रहे हैं हम एक चीज़ को दूसरे से. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? comparative degree BIGGER. Next, this flower is dash than that one. यह flower उस flower से ज़्यादा सुंदर है. We will write here more beautiful. What will you write? Yes, more beautiful. Next, this is the dash story. Sorry, this is the dash. Here is a gap. Book I have ever read. यह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है. As you can see word the here, so you have to fill here most interesting word. Okay beta. Next, non-smokers usually live dash than smokers. We will compare. So here we'll use the word longer. That means जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं उनसे ज़्यादा जीवन कौन जीते हैं? जो स्मोकिंग नहीं करते. So yeah, we have to write here longer word. Next, which is the dash animal in the word? That here is the word dangerous. As you can see, here is the word, so we have to write most dangerous animal in the world. Next, a holiday by sea is dash than a holiday in the mountains. एक समंदर के किनारे बिताया गया अवकाश पहाड़ियों में बिताए अवकाश से ज़्यादा अच्छा होता है. So you have to write here the word better, as you have to change the word good. You will never write gooder, but will you write better, यानी ज़्यादा अच्छा. Next, it is strange that often a coke is dash than a beer. ये बड़ी अजीब बात है कि कोक कोल्ड ड्रिंक होता है जो आप पीते हैं वो ज़्यादा महंगा होता है बियर से. सो dash women on earth. What will you write here? Yes, absolutely correct. You will write here richest, यानी पृथ्वी पर सबसे धनवान औरत कौन है. नेक्स्ट, द वेदर दिस समर इज इवन डैश देन लास्ट समर. इस गर्मी मौसम पिछले साल की गर्मी से ज़्यादा खराब है. हियर इज अ वर्ड बैड, यानी बुरा है. फॉर बैड
when will we compare? We will write here was, W-O-R-S-E. He was the dash thief of all. Which word will you write here? Which degree we will use? Yes, it is superlative degree and write here cleverest. वह सब चोरों में सबसे ज़्यादा चतुर है. Next, you are to do it C exercise instead of B, and you are to choose the correct adjectives. First one is Rima is the dash of the three sisters. रीमा तीन बहनों में सबसे ज़्यादा प्रीटी है. सो यू आर टू टिक मार्क to the superlative degree of the word pretty. Next, the blue whale is the bigger or biggest animal on the earth. Blue whale पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर है. As we are comparing to all, so you are to do tick on the word biggest. Next, Ria had hidden the files on the है. So you are to do tick on the topmost. Next, with a less or little luck, he will be able to finish the work on time. It means अगर उसका थोड़ा सा भी भाग्य ने साथ दिया तो वह समय पर काम पूरा कर लेगा. थोड़ा सा. You will do the tick on the word little. Okay बेटा. Next, Rahul was chosen as the handsome और मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज क्लास. राहुल को अपनी क्लास में सबसे सुंदर लड़के के रूप में चुना गया. सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा किससे? क्लास में सभी बच्चों से. सो यू आर टू डू टिक ऑन द वर्ड मोस्ट हैंडसम. नेक्स्ट, शी वॉज हैप्पी एज शी हैड स्कोर्ड वेरी बेस्ट और गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन. वह खुश थी क्योंकि उसने बहुत अच्छे नंबर लिए थे एग्ज़ाम में, यानी गुड मार्क्स. इट इज़ पॉजिटिव डिग्री. वी आर सेइंग इट इन अ सिंपल वे. सो डू टिक मार्क ऑन द वर्ड गुड. Here chapter 7 ends, and I think you have got all the rules, all the words and exercises very well. You are to fill all the exercises neatly. We will meet in our next video with a new chapter. Till then, stay safe, fit and healthy at your homes. Bye.